Hello students, let's start off with today's discussion about the previous year questions from the chapter P block elements, and today we are going to discuss about group 15, 16, 17 and 18. So let's start off with our very first question. Now the very first question reads out that out of the following statement, which statement is the correct statement? We need to find out कौन सा statement सही है. So let's start off with the very first question. The first question reads out, the correct statement amongst the following is what? The first option is SiH3 the whole thrice N is planar and less basic than trimethylamine. Next one is silylamine is pyramidal and more basic than methylamine or trimethylamine. Now the third option reads out, SiH3 the whole thrice N, that is silylamine, is pyramidal and less basic than CH3 the whole thrice N. And lastly, the fourth option reads out, silylamine is planar and more basic than trimethylamine. So over here, सबसे पहले हमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी is the structure. यार अगर स्ट्रक्चर देखें तो चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं SiH3 the whole thrice. So over here you have SiH3 and ऐसे तीन groups are attached to nitrogen, giving you SiH3 the whole thrice. Similarly, now if you notice the structure of CH3 the whole thrice N, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे जो चेक करने वाली चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है. देखो, हमें देखने से ये ज़रूर लगता है कि नाइट्रोजन इज मेकिंग 3 bonds and therefore its hybridization needs to be sp3. Why sp3? The reason being because nitrogen has one lone pair, so एक lone pair के लिए एक रूम लगेगा and 3 si groups के लिए तुम्हें 3 और rooms लगेंगे, so total becomes 4 rooms and 4 rooms is nothing but sp3 hybridization. लेकिन यहाँ पे एक important चीज़ जो हमें understand करनी पड़ेगी is that silicon has vacant d orbitals and यार अगर इसके पास vacant d orbitals है तो definitely he is going to show you a phenomena of back bonding. And if he is going to show you a phenomena of back bonding, तो होगा क्या? तो your single bond would gain a partial double bond character. And because of this partial gaining of double bond character, तुम्हारा जो hybridization जो हमें लग रहा था sp3 होना चाहिए, this would be sp2. And if the hybridization is sp2, तो geometry क्या होगा? Definitely your geometry would be triangular planar. Similarly, अब आगे देखते हैं. Let's talk about trimethylamine. Now over here in trimethylamine, कार्बन के पास कोई भी vacant orbitals नहीं है. And यार अगर कार्बन के पास कोई vacant orbitals ही नहीं होंगे तो definitely this person is not going to show you back bonding. And if he is not going to show you back bonding, तो definitely इसका hybridization will remain sp3. And whenever you have sp3 hybridization, the compound is tetrahedral. And अगर तुम्हारा कंपाउंड टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो डेफिनेटली आई कुड से दिस वर्ड वुड बी अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल. अच्छा, तो चेक करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में या सबसे पहले ऑप्शंस, लेट्स अंडरस्टैंड कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है कि सिलाइलअमाइन इज प्लेनर. देन एज ऑफ नाउ द करेक्ट ऑप्शंस कुड बी ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी. आगे फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट सिलाइलअमाइन इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन trimethylamine. Further, the next option, that is option D, says that silylamine is planar but it is more basic than trimethylamine. Now, एक चीज़ नोटिस करना, अगर silylamine में back bonding हो रहा है तो definitely the lone pairs are involved in that back bonding. And यार अगर lone pairs already bonding में involved है तो उनको donate करना easy हो जाएगा या difficult हो जाएगा? Then it would be slightly more difficult. And therefore, what I could say is that trimethylamine would be much more basic as compared to silylamine. And therefore, the correct option over here is that silylamine is planar definitely and it is less basic than trimethylamine. So अपना correct option बन जाएगा option A. So let's move on with the next question. The next question says the pair that contains 2 P single bond H bonds in each of the oxo acids. So सबसे पहले to understand कौन से कंपाउंड में pH बॉन्ड्स हैं एंड दैट टू 2 pH बॉन्ड्स है, तुम्हें स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना. सो ओवर हियर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंपाउंड्स. द वेरी फर्स्ट कंपाउंड दैट वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड
is H3PO2. So H3PO2, the structure would be something like this. You would get P double bond O, single bond OH, single bond H, and single bond H. Hey, now if you notice in this compound, do you have two pH bonds? Then definitely you would have two pH bonds over here. So सबसे पहले we could just make a note of this कि हाँ यहाँ पे two pH bonds present है. Also, what we need to know, यार इस compound का नाम क्या होता है? Then the name of this compound is hypophosphorus acid. This one is for hypophosphorus acid. चलो अगला देखते हैं. The next compound that we will deal with, the structure is, let's see the next compound. The next one is H3PO3. यार H3PO3 का structure कैसे आएगा? तो again you would have centrally packed phosphorus, double bond O over here. Here you would get OH. Next one more OH. And this time you would have a H group over here. अच्छा, notice करने वाली बात, यहाँ पे pH bonds तो है, but क्या ये दो है या एक है? Then it's only one in number, and therefore you would get only one pH bond. So let's write down this. Also you would get one pH bond. And what's the name of this compound? Then the name of this compound is orthophosphorus acid. So this is orthophosphorus acid. अच्छा, ortho stands for what? Then ortho stands for symbolizing that ये compound at room temperature solid होगा, and that too a white solid. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. The next compound that we'll be dealing with, the structure is H4P2O5. Now H4P2O5, what could be the structure? The structure would be, you have two phosphorus, so यहाँ पे definitely you would get, let me rewrite it once again for you. You would get phosphorus, single bond phosphorus, and in between you would have a oxygen bond. Over here you would get phosphorus doubly bonded with oxygen, single bond OH, single bond H. Over here you would get phosphorus double bond oxygen, single bond OH, and single bond H. अच्छा, अब notice करो यहाँ पे in this compound do you have pH bonds? Definitely है. And कितने हैं? तो definitely दो है. So over here, yes, you get two pH bonds. So let's write it down. So you have two pH bonds over here. And what could be the name of this compound? The name comes out to be pyrophosphorus acid. ठीक है, चलो अगला वाला भी देख ही लेते हैं. हमने आंसर तो मिल गया है ना, बट लास्ट वाला एक कंपाउंड का उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट स्ट्रक्चर और द लास्ट कंपाउंड, then the compound that we would be discussing right now would be H4P2O6. Okay, now H4P2O6, what could be the structure? Once again, phosphorus दो है ना, so यहाँ पे एक चीज़ तो definitely आ जाएगी, P single bond O, single bond phosphorus. You would get double bond O over here. इधर H, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, एंड यहाँ पे भी OH आ जाएगा. सो ओवर हियर व्हाट यू कुड से कि इसमें कोई भी pH बॉन्ड नहीं है. एंड व्हाट कुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, लेट्स राइट इट डाउन ऑल्सो. द नेम इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, सो दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, कर पाएंगे इतना? नो वरीज विद दिस. सो अब चेक करते हैं आंसर के हिसाब से. हमें एक ऐसा सेट ढूंढना था जिसमें दोनों कंपाउंड्स हैव टू पीएच बॉन्ड्स. सो यार दो पीएच बॉन्ड्स कौन से कंपाउंड्स में? तो इट्स इन H3PO2 द फर्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज H4P2O5. इन दोनों में दो पीएच बॉन्ड्स हैं. सो डेफिनेटली you would get H3PO2, which is nothing but option D, which would be your correct option. Okay, let's move on with the next question. The next question reads out, the first electron gain enthalpy of oxygen is negative 141 kilojoules per mole. Its second electron gain enthalpy would be what? And the given options, the very first option, it's a positive value. The second option reads out, it's more negative value than the first one. The second option, it's almost the same. The next option, that is option D, is negative but less negative than the first. Now over here एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखो, that तुम्हारे ऑक्सीजन ने ना
which is already he has gained one electron. या चलो इसको इस तरीके से याद रखते हैं. You have an oxygen atom and we all know oxygen needs to gain 2 electrons. So हुआ क्या, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड गेट्स कन्वर्टेड टू O नेगेटिव. अब फॉर गेनिंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लगा, दिस एनर्जी was minus 141 kilojoules per mole. Hey, if the energy was negative, that means the reaction is endothermic या exothermic? Definitely it's exothermic. अब होता क्या है? Now if this oxygen negative tries to gain one more electron over here, this incoming electron would start repelling with the oxygen which is already negative. ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा. एंड यार इन दोनों में अगर रिपल्शन हो रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू पुट डाउन मोर एनर्जी सो दैट तुम इस रिपल्शन को कंट्रोल कर पाओ. एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये रिएक्शन जो होगा this would be an endothermic reaction. Hey, and अगर reaction endothermic है, that means the energy would be positive or negative, then it's definitely a positive entity. And therefore, option A over here would stand out as the correct option. So, याद रखने वाली बात, ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. क्यों होगी? सो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन विच इज नेगेटिवली चार्ज वुड repel each other, and thus you would require more force or more energy to control that repulsion and then to make oxygen gain an electron. ठीक है, चल let's go on with the next question. So the next question says the good reducing nature of H3PO2 is attributed in presence of what? The first option reads out 2 pH bonds, second option is 1 pH bond, the third option is 2 POH bonds and the last option is 1 POH bond. अच्छा, अब चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल H3PO2 अगर स्ट्रक्चर देखें, वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. सो इफ यू हैव H3PO2, the structure goes something like this. You would have phosphorus double bond O, single bond H over here, 1 OH and one more H. So यहाँ पे यार एक OH ग्रुप है या एक phosphorus and OH bond है and 2 PH bonds है. Now over here H3PO2 is a good reducing agent because he could give hydrogens in more numbers. And ये क्यों दे पाता है ज़्यादा hydrogens? Because the number of pH bonds is absolutely more. So over here, what could be the correct answer? It's definitely option A. Let's move on with the next question. The next question says the order of oxidation states for phosphorus atoms in H3PO2, H3PO4, H3PO3 and H4P2O6 is respectively what? So let's try to write down the oxidation state of phosphorus in all the compounds and then discuss about the options. The very first thing, that is H3PO2. अच्छा, अब अगर नोटिस करेंगे तो फर्स्ट वन इज H3PO2, द नेक्स्ट वन इज H3PO4, उसके बाद H3PO3 and finally you would have H4P2O6. So let's see what is the oxidation state of phosphorus. अच्छा, सबसे पहले H3PO2, in this the oxidation state of phosphorus is +1. Why? So oxygen becomes -2 becomes -4, hydrogen becomes 3, so obviously 4 - 3 is 1. So यहाँ पे phosphorus +1 हो जाएगा. अच्छा, next H3PO4 if you notice, तो यहाँ पे phosphorus का oxidation state क्या होगा? Then in H3PO4 the oxidation state would be +5. Next, if you notice about H3PO3, then H3PO3 would have the oxidation state as +3 for phosphorus and lastly H4P2O6 अगर इसमें देखा जाए तो this would be +4. तो यार सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे मिल रहा है? तो obviously it's H3PO4, मतलब this would rank number 1. This, that is H4P2O6 would rank number 2. Then comes H3PO3 which comes out to be number 3 and finally H3PO2 which comes out to be number 4. So the correct option over here, जो हम लोग का ये कंडीशन या हम लोग का ये ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है, the correct option over here
is option B. चेक करो सबसे ज्यादा H3PO4, हाँ बिल्कुल H3PO4 सबसे ज्यादा. अच्छा उसके बाद H4P2O6, yes absolutely right. Next comes H3PO3, ये भी सही है. And last one is H3PO2. ठीक है. The next question reads out the species in which nitrogen atom has sp hybridization. Now over here sp hybridization का meaning क्या होता है? तो sp hybridization means you should have a linear geometry. So हमें बस एक ऐसा compound ढूंढना है जिसकी geometry linear होती है. Let's see. The very first is NO2 negative. Now NO2 negative, the structure comes out to be something like this. You would have a nitrogen with the lone pair. You would get oxygen singly bonded and a doubly bonded oxygen. अच्छा जो oxygen singly bonded है उसके ऊपर negative charge आएगा. So over here hybridization cannot be sp hybridized. Why? So because this is not a linear geometry. Further, let's look up with the next option. The next option B, which is NO3 negative. So NO3 negative, the structure would come something like this. You would get nitrogen with double bond O, one coordinate bond oxygen and a single bonded oxygen which has a negative charge. अच्छा यहाँ check करो वापस से hybridization cannot be sp. Why? Because the geometry is not linear. Further, if you notice the next compound which is NO2. So you have NO2, the structure is something like this. One double bond oxygen, one coordinate bond oxygen and a lone pair. Again, इसमें भी structure linear नहीं है. Finally, let's move on with the last option which is NO2 with a positive charge. Now over here NO2 with a positive charge has a geometry which is somewhat like this. Nitrogen gains a positive charge in the center. अच्छा यहाँ पे notice करो. Over here, do you have the geometry which is a linear geometry? And यार अगर तुम्हारे पास linear geometry है तो definitely this would be an sp hybridized nitrogen atom. So therefore, what is the correct option over here? The correct option is option D. Let's move on with the next question. The next question says the product formed in the reaction of SOCl2 and white phosphorus is what? So over here, let's read out the options first. ध्यान देना. The first option says PCl3, second option is S2Cl2 which is sulfur monochloride. Next one is SO2Cl2. Next option is POCl3. अब ध्यान में रखने वाली बात, अगर white phosphorus का reaction किया जाता है with SOCl2, then you would get a compound which is PCl3 plus S2Cl2. Hey, S2Cl2, is it there in the options somewhere? Then yes, this is option C, and therefore the correct option over here is option C, that is S2Cl2. Once again, एक और चीज ध्यान में रखना, S2Cl2 has a book-like structure. So if you remember, हम लोग ने ऐसा कुछ structure किया था जहाँ पे एक book-like structure मिलता था, and thus S2Cl2 is the correct option. Let's move on with the next question. The next question reads out, which amongst the following are the wrong statements or is the wrong statement? Let's see. The first statement, OnCl and ONO negative are not isoelectronic. Second statement is O3 molecule is bent in structure. Next one, ozone is violet black in solid state. Next one, ozone is a diamagnetic gas. हमें एक ऐसा statement ढूंढना है जो कि गलत है, तो ध्यान रखना है. So the very first statement that could be ruled out is your statement D. Why statement D? Because ozone is definitely a diamagnetic gas and this statement is therefore a correct statement. हमें wrong statements ढूंढने, ठीक है? So obviously option D आंसर नहीं आ सकता. चलो आगे बढ़ते हैं with the first option, that is OnCl and ONO negative are not isoelectronic. अच्छा यार यहाँ पे देखते हैं, if you have ON and Cl and you have ONO with a negative charge, तो चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना. सो ओवर हियर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो यार ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. सो ऑक्सीजन बिकम्स 8.
nitrogen becomes 7 and chlorine becomes 17. So 8 plus 7 plus 17 comes out to be 32 electrons over here. अच्छा आगे देखते हैं next compound which is ONO negative. Again oxygen 8, nitrogen comes in with 7, oxygen 8, so 8 plus 7 plus 8 plus 1 comes out to be how much? Then over here the total answer would be 24 electrons. Hey, now तुम्हें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे तो तुम बोलते ये स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. अब सेम नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? डेफिनेटली दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है? हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट? सो ओवर हियर दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वी कांट गेट द आंसर विद दिस. फर्दर लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी, ओजोन इज अ बेंट मॉलिक्यूल. नाउ ओवर हियर इफ यू नोटिस हमें ओजोन का स्ट्रक्चर पता है. And ozone, the structure is something like this. So definitely this molecule is a bent molecule. तो यार ये statement भी सही हो जाता है. So obviously even this couldn't be your answer. Now which is the correct statement over here? The only possible option is option C. So ध्यान में रखने वाली बात, ozone is वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज ओजोन सॉलिड स्टेट में पर्पल इन कलर होता है एंड गैसियस स्टेट में ये कंपाउंड ब्लू इन कलर बनता है या पेल ब्लू इन कलर बनता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ओवर हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स आउट, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ NaOH गिव्स यू phosphine along with an other phosphorus containing compound. The reaction type, the oxidation state of phosphorus in phosphine and the other product respectively are what? So over here हमें सबसे पहले तो यार रिएक्शन जानना चाहिए कि रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है. देखते हैं. So over here what we need to know कि अगर हम लोग white phosphorus लेते हैं, that is phosphorus when treated with NaOH, then we have learned this gives you phosphine, that is PH3, plus it gives you a compound NaH2PO2. ठीक है. नाउ ओवर हियर चलो ऑक्सीडेशन नंबर्स भी देख लेते हैं. फॉस्फीन कंटेन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3. तो चलो ये सही है, काफ़ी सिंपल भी था. चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं यार. फॉस्फोरस ओवर हियर ऑक्सीजन इज -2, 2 ऑक्सीजन सो बिकम्स -4, सो यहाँ पे -4 हो जाएगा. हाइड्रोजन बिकम्स +1, sodium becomes +1. Okay, now how many sodiums do you have? You have only one sodium, so +1 ही रहेगा. How many hydrogens do you have? So you have 2 hydrogens, therefore यहाँ पे +2 हो जाएगा. Now over here +2 and +1 becomes +3, +3 and -4 becomes -1. अच्छा, -1 का opposite would be +1. So phosphorus का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? इट वुड डेफिनेटली बी +1. लेकिन यार अगर ऑप्शंस चेक करेंगे ना तो ऑप्शंस में कहीं पे भी +1 ऑप्शन ही नहीं है. सो व्हाट वी कुड थिंक अबाउट दिस नाउ, अगर ऐसा सिचुएशन आता है ओनली देन, otherwise you won't think about it right now. Then in this situation we need to know that over here this reaction is carried out at heated temperatures. So what would happen? तो एक possibility ये है that NaH2PO2 on heating gets converted into Na2HPO4. Now over here if you notice Na2HPO4, in this phosphorus का oxidation state क्या आता है? Then phosphorus का oxidation state is +5. And do you have +5 in the options? Then definitely you have a +5 reaction or you have a +5 oxidation state in the option. So therefore, which could be the correct options right now? The correct options could be -3 and +5, that is option A as well as option C. अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो चलो एक और काम कर लेते हैं. Over here if you notice, then phosphorus initially was in elemental state, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0. अब चेक करो यार, 0 से वो -3 बन रहा है. हाँ बिल्कुल सही है. अच्छा 0 से ही
वो कहाँ जा रहा है? सो ज़ीरो से ही वो +1 में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वन एलिमेंट विच इज़ ज़ीरो इज गेटिंग कन्वर्टेड टू +1, इट्स ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड टू -3, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली a disproportionate redox reaction, and thus your correct option over here would definitely be option C. That is, you would get a disproportionation reaction जिसमें phosphine भी मिलेगा, wherein your oxidation state of phosphorus would be -3, and you would also get what? You would also get NaH2PO2. पहले तो ये मिलेगा जिसमें phosphorus का oxidation state was +1, लेकिन +1 ऑप्शन नहीं है, तो हमने कुछ और सोचा उसके आगे, दैट NaH2PO2 ऑन हीटिंग गिव्स यू Na2HPO4, एंड इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा. सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली ऑप्शन सी. ठीक है, so let's move on with the next question. The next question says the extra pure N2 can be obtained by which of the following? On heating, which of the following? The very first option is NH3 with CuO. Second option is ammonium dichromate. The third option is ammonium nitrate, and the last option is barium nitrite. Now over here students, understand, थोड़ा सा ध्यान रखना, extra pure N2, highly pure form of N2 would be obtained by decomposition of barium nitrate. या नॉट नेसेसरी बेरियम नाइट्राइड ही होना चाहिए, ये तुम कोई भी नाइट्राइड ले लो, एंड अगर तुम उसका डिकम्पोजिशन कर देते हो तो तुम्हें हाईली प्योर फॉर्म ऑफ N2 मिलेगा, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डेफिनेटली ऑप्शन डी. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिंपल वन, बट ध्यान रखना एंट्रेंस में पूछा गया 2007. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द परसेंटेज P character in the orbitals forming P single bond P in P4 is what? Hey, now if you talk about P4, तो हमें पता है P4 में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम विद दिस. अब अगर नोटिस करोगे तो एवरी फॉस्फोरस इज ही मेकिंग 3 बॉन्ड्स. हाँ बिल्कुल सही है, वो 3 बॉन्ड्स तो बना रहा है, एंड प्लस यार उसके पास एक लोन पेयर भी है ना. सो ओवर हियर कैन आई से every phosphorus over here is sp3 hybridized. मतलब कैसे sp3 बोला जा रहा है? तो बिकॉज यू वुड हैव 3 ऑर्बिटल्स, तो उनको 3 रूम्स लगेंगे, एंड एक लोन पेयर है, तो टोटल तुम्हारे पास 4 रूम्स होने चाहिए. सो sp3 मतलब s का एक रूम एंड p के 3 रूम्स, सो देयरफॉर यू वुड गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड यार हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर कितना होता है, तो इट्स डेफिनेटली 75%. And therefore, the correct answer over here is 75%, which is option D. Let's move on with the next type of questions. Now, यहाँ पे ध्यान रखना, you would have more than one option correct. ठीक है, तो चलो सबसे पहला देख लेते हैं. The compounds or compound which generate or generates N2 gas upon thermal decomposition below 300 degrees Celsius are what? Then the options that are given to us is ammonium nitrate, second one is ammonium dichromate, third one is barium nitrite जो हम लोग ने just देखा था, and the last one is magnesium nitrate. अब ध्यान देना, over here बस एक ऐसा कंपाउंड है जो above 300 डिकम्पोज होगा, बट करेंटली क्वेश्चन इज सेइंग कि तुम्हें ऐसे कंपाउंड्स ढूंढ के निकालने हैं विच आर बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब एट लोअर टेम्परेचर्स दे शुड डिकम्पोज. तो अमोनियम नाइट्रेट डेफिनेटली इट डिकम्पोजेज एट लोअर टेम्परेचर, बहुत इजीली टूट जाएगा. अच्छा, अमोनियम डाइक्रोमेट ये भी टूट जाएगा. बेरियम नाइट्राइड इवन दिस would break at a very low temperature or at least below 300 degrees Celsius. So therefore the correct option over here is option A, B and C. All three of these are correct statements. अच्छा, याद रखने वाली बात, Mg3N2 would be more stable and therefore it could not break easily or it could not break at a temperature of below 300 degrees Celsius. लेकिन ये ब्रेक ज़रूर होगा एंड ये भी तुम्हें प्योर फॉर्म ऑफ N2 देगा. कैसे? तो सिंपली इफ यू जस्ट हीट इट आउट यू वुड गेट मैग्नीशियम प्लस N2, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. एंड ओवर हियर मैग्नीशियम सॉलिड होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, N2 गैस होगा, ही वुड जस्ट मूव अप. सो अगेन यू आर गेटिंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ N2. ठीक है, चलो आगे देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
based on compounds of group 15, ध्यान देना, the correct statement or statement is or are what? The very first statement what they have asked you is Bi2O5 is more basic than N2O5. Now what we know is base is nothing but what? Base is nothing but a compound which could give electrons, or base is nothing but a person who donates electron. Here as we move down the group, bismuth का size increase होगा and electronegativity decrease होगा. So over here what I could say that bismuth oxide would be more basic as compared to nitrogen pentoxide. So over here this statement is definitely the right statement. Bi2O5 is much more basic as compared to N2O5. Next up, the second statement reads out NF3 is more covalent than BiF3. तो यार ये स्टेटमेंट भी तो सही होगा ना, बिकॉज हमें एक चीज पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन फजान्स रूल, एंड फजान्स रूल क्या स्टेट करता है? तो इट सेज दैट स्मॉलर द कैटायन स्ट्रॉन्गर is the covalent character. ठीक है. अब over here nitrogen is smaller in size, bismuth is larger in size. So therefore यार किसका covalent character ज़्यादा होगा? It's definitely nitrogen would have much more covalent character as compared to BiF3. ये statement भी सही हो जाता है. अच्छा next one, PH3 boils at a lower temperature than NH3. तो अगर तुम्हें याद रहेगा जब हम लोग P block डिस्कस कर रहे थे, we said that PH3 has the lowest melting and boiling point amongst group 14 elements, yeah, group 14 hydrides. So definitely PH3 needs to have a lower boiling point as compared to NH3. अब ये ऐसा क्यों होता है? चलो ये भी देख लेते हैं. NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वुड हैपन, तो डेफिनेटली यू वुड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड अ गुड अमाउंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव. तो यार अगर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव मिल रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाट यू वुड से you would get hydrogen bonding, and अगर hydrogen bonding मिल रही है तो yes, your compound would have a higher boiling point as well as a higher melting point. But then if you talk about phosphorus and hydrogen, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत मिनिमम होता है. एंड ओवर हियर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत मिनिमम है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ या हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म ही नहीं होंगे, एंड अगर होंगे भी तो भी बहुत वीक होंगे. सो देयरफॉर दिस कंपाउंड हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट. सो डेफिनेटली इवन दिस स्टेटमेंट गोज एज द राइट स्टेटमेंट. हे लेट्स लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, शायद से ये भी सही हो जाए. चलो देखते हैं. द N single bond N is stronger than P single bond P. Now this statement is absolutely wrong. Why is that so? Because सर अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन देखा जाए तो हाँ इनमें एक लोन पेयर है, एंड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस देखा जाए तो इनमें भी एक एक लोन पेयर है. नाउ इफ यू रिमेंबर नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज ना, तो अगर नाइट्रोजन छोटा है तो बोथ द लोन पेयर्स वुड बी क्लोज टू ईच अदर, एंड अगर लोन पेयर्स आर क्लोज टू ईच अदर डेफिनेटली इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज रिपल्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी वुड बी लेस, एंड देयरफॉर N single bond N is much less stable than P single bond P, and therefore this becomes the wrong statement. तो यार सही statement कौन सा है? According to group 15, it's statement A, B and C. Let's move on with the next type of questions. The next question says nitrogen oxides. In nitrogen oxides, the oxide that contains N single bond N are what? Now over here if you notice N2O, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो यार N2O gets a structure something like this. Okay, so over here you have nitrogen triple bond nitrogen, मतलब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बना फिर ही तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना. So over here yes, he contains N single bond N. This could be your answer. Next is N2O3. अच्छा N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो N2O3 gets a structure something like this. So over here you would have N single bond N, double bond O over here. इस तरफ एक और डबल बॉन्ड O आ जाएगा,
and you would get a single bond oxygen over here. अच्छा अब चेक करो यहाँ पे n single bond n है क्या? हाँ बिल्कुल है, n single bond n is absolutely present over here. So therefore even this could be your right option. Hey, let's talk about the next one, that is N2O4. Then over here if you notice N2O4, what is the structure of this compound? Then the structure of N2O4 is N single bond N, double bond O, double bond O, oxygen over here, one more oxygen over here. So definitely यार इसमें भी n single bond n present है. Moving on with the last one, that is N2O5. Then you would get a structure something like this, which would be N double bond O single bond oxygen. बीच में you would get an oxygen, then a nitrogen, and again double bond O single bond O. यार यहाँ पे चेक करोगे अगर तो you don't have N single bond N, you definitely have N single bond oxygen single bond N. So therefore this couldn't be your right answer, and thus what are the correct options over here? The correct options over here are option A, B and C. Let's move on with the next question. The next question says white phosphorus P4. Again a question related to white phosphorus. Check करो 1998 का question है ये, so it's quite an old question, but then let's understand this. So if you talk about white phosphorus P4 and they have given some statements, हम लोग पहले structure draw कर लेते हैं. तो as we already know structure कुछ इस तरीके से बनेगा जो हम लोग ने पिछले वाले question में भी किया था, right? So you get a structure something like this. अच्छा अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स सही है हम लोग को वो देखना है. ठीक है चलो, सबसे पहला पॉइंट, इट कंटेन्स 6 p सिंगल बॉन्ड p विच इज नथिंग बट सिग्मा बॉन्ड्स. अच्छा चेक करो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 6 है क्या? हाँ बिल्कुल है. एंड ऑल द 6 बॉन्ड्स आर दे p सिंगल बॉन्ड p बॉन्ड्स? देन डेफिनेटली इवन दिस इज राइट. सो दस ऑप्शन A becomes your right statement. Hey, moving on with the next option. The next option says you would get 4p single bond p. Then definitely this won't be the right option. क्योंकि अगर 6 p single bond p already मिल रहे तो 4 तो नहीं मिलेंगे यार, मतलब obviously this can't be the right option. Moving on with the next option, it contains 4 lone pairs of electron. So यार every phosphorus contains 1 lone pair each. एंड टोटल तुम्हारे पास 4 फॉस्फोरस है, सो डेफिनेटली कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे? इट वुड बी 4 लोन पेयर्स ओवर हियर. मूविंग ऑन, ऑप्शन सी इज दस द करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं. द लास्ट ऑप्शन सेज p single bond p has a bond angle of 60 degrees. Now over here we are talking about this angle p single bond. Let me just change the color for you. So over here हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. p single bond p सिंगल बॉन्ड P ओवर हियर. सो अगर पूरा एंगल चेक किया जाए तो पूरा एंगल वुड बी 120, बट यहाँ पे दिस वुड बी 60 डिग्रीज, एंड देयरफॉर डेफिनेटली इवन दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट. सो तुम्हारे करेक्ट आंसर्स क्या बन जाता है? द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन A, C and option D. These would be your 3 correct statements. Let's move on with the next question. Now the next question is a passage based question. बहुत सिंपल है, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एडवांस, बट देन बहुत हाई चांसेस है कि दिस सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन मेंस आल्सो. डेफिनेटली नॉट इन फॉर्म ऑफ अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आई हैव जस्ट इनकॉर्पोरेटेड इट ओवर हियर. सो लेट्स सी. द पैसेज सेज अपॉन हीटिंग KClO3 in presence of catalytic amounts of MnO2, a gas W is formed. Fine, let's move on further. Excess amount of W when reacted with white phosphorus, it gives X. Moving on, the reaction of X with pure HNO3 gives Y and Z. हमारा क्वेश्चन यही होगा. Definitely you need to identify what exactly is X, Y and Z and W also. So let's look at the first question. The first question says Y and Z are respectively what? यार लेकिन Y and Z पता करने के लिए पहले W भी तो पता होना चाहिए ना. So चलो पूरा reaction we'll understand it in one single go. Now over here what all things they have said? Let's see. They have said that you have a compound KClO3. Perfect. Now KClO3 is treated with MnO2. And obviously this is in catalytic property. Now I'm not giving you the entire reaction, I'll just give you the gist of the reaction. देखो, so KClO3 when treated with MnO2 gives you KCl plus O2. Hey, KCl is a solid and definitely gas कौन सा मिलेगा फिर? तो gas is nothing but oxygen
and therefore oxygen is W over here. चलो आगे देखते हैं. Now when this oxygen, that is O2, is treated with white phosphorus P4, it gives you a compound P4O10. अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने P4O10 क्यों लिखा है, बिकॉज एक वर्ड दिया गया है तुम लोग को क्वेश्चन में, एंड दैट वर्ड इज एक्सेस अमाउंट ऑफ W. अच्छा आगे देखते हैं. नाउ P4O10, आगे उन्होंने क्या बोला है, यू आर ट्रीटिंग दिस विद प्योर HNO3. तो यार अगर इसके साथ ट्रीट किया जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू वुड गेट N2O5 विच इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्लस HPO3. So over here, let's see which all options matches our reaction. अच्छा check करो. In the first question they are asking about Y and Z, and अगर तुम reaction check करोगे तो Y and Z क्या है, तो obviously Y is nothing but N2O4 and Z is nothing but HPO3. So therefore option A is your correct option over here. Let's move on with the next question. The next question says W and X ये क्या है. Hey, W is definitely, we already know this compound is nothing but oxygen, है ना. So oxygen, अरे यार लेकिन oxygen तो दो options में है, that is O2 and P4O10, and next one is O2 and P4O6. कौन सा ऑप्शन सही आएगा? It's obviously option A once again, O2 and P4O10. So that was with respect to the passage based question which we just saw. ध्यान रखना ये question could be asked as a normal JEE question also. ज़रूरी नहीं है passage देना ही पड़े, ठीक है. They could just give you a flow chart as we have discussed right now, ठीक है. So that was all with respect to P block groups 14 and group 15. In the next module we will be discussing about group 17 as well as group 18. Till then, thank you students and happy learning. Also, please feel free to write down the comment as to which chapter you would be needing next with respect to the PYQs or the discussion of PYQs. Thank you and happy learning once again.